Hi guys, and welcome back to another video of mine. So in this video we are quickly going to discuss about how I cleared my Inter Group 2, to be specific, CA Inter Group 2 with self-study and no coachings, no tuitions, neither offline nor online. It was just purely based on modules. So I gave my Intergroup 1 in November 2023 and then मेरा May 24 में Intergroup 2 आया. So because I was in the old scheme earlier, I had 4 subjects in Group 1, that was accounting, taxation, costing, and there was one more subject, corporate law. So these 4 subjects I had already given, but as I shifted from the old scheme to the new scheme because it became compulsory, so I only had to give 2 papers for Group 2, that was audit and FMSM. So FMSM was 1 paper, audit and ethics was 1 paper. And abhi if you see the new scheme, so Group 2 mein it's costing, audit and FMSM. So those people who are going to give their exams in September 24, that is the coming month, so usme you all have to give 3 papers. But luckily I had given 4 papers earlier, so mere paas only there was an option to give 2 more. So the thing was कि because मेरा college was also going side by side, तो I पहले भी मैंने ग्रुप 1 में भी एंड इवन फाउंडेशन में भी मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी करने के लिए. इट्स नॉट लाइक कि कोचिंग लेना इज अ बैड थिंग, यू मस्ट नॉट डू इट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नो. बट द थिंग इज कि आई फाउंड दैट द सब्जेक्ट्स आर मैनेजेबल इनफ एंड मैं उनको कॉलेज में भी पढ़ रही थी साथ साथ. सो आई वॉज वेरी रेगुलर टू माई कॉलेज ऑल्सो, टेकिंग नोट्स, taking all the lectures, making notes, submitting assignments and everything. So I was quite up to date with the subject. And audit also I was studying in my 6th semester, and FMSM I had already studied in my 5th semester. So I knew somewhere that I'll be able to do it. Then I started my study. I'm not that person जिसका मतलब रिजल्ट आया एंड मतलब एग्जाम दे दी उसके बाद ग्रुप 2 की तैयारी करने लगे. बट इट वाज नॉट माय केस. मतलब मेरा एग्जाम ओवर हो गया था नवंबर में, मेरे को पता था कि जनवरी में रिजल्ट आएगा. रिजल्ट अच्छा ही होगा बिकॉज हाउ यू डू इन द पेपर यू ऑलरेडी नो दैट, राइट. तो वो मेरे को पता था. बट उस वक्त दिसंबर में आई हैड माई सेमेस्टर एग्जाम्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो मैंने नई पढ़ाई की थी. ग्रुप 2 मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था. आई जस्ट स्टडीड फॉर अपना ग्रुप 1. आई गेव द एग्जाम एंड उसके बाद अपना मैं कॉलेज का पढ़ने लगी एंड कॉलेज का एग्जाम दिया. फिर रिजल्ट आ गया. तो रिजल्ट केम इन जनवरी फर्स्ट वीक and after that I started to study for my group 2, that is these 2 subjects. Now the paper had to happen in May and मेरे पास था January, February, March, April, 4 months, and I had decided कि by March I'll complete मेरे दोनों subjects and April I'll keep for my revision purpose and mock exams भी आ जाते हैं. So I had decided it something of that sort. Please ignore the background, I'm moving a lot. तो आई डिसाइडेड इट लाइक दैट एंड होपफुली हो भी गया था बिकॉज अगेन एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो मैंने पढ़ रखा था पहले ही, तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी. नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज, तो व्हाट आई फाउंड हार्ड वो बच्चों को बहुत ईजी लगता है और स्कोरिंग भी लगता है, इट वॉज ऑडिट. तो ऑडिटिंग इज ईजी फॉर मेनी स्टूडेंट्स बट फॉर मी इट वॉज लाइक काफ़ी क्रैमिंग वाला पार्ट. एंड मी एज अ पर्सन हु लव्स टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स, I am not a person who can cram each and every word and then vomit it up in the paper. I need a very understanding and a conceptual understanding of each and everything, and then I try to modify the language and everything and make it suit to what I prefer. But it was not the case with audit, because in audit you have a lot of auditing standards which you need to study. You have assurance standards and a lot of other things which you need to focus on. So my first focus auditing I started, so I was just giving a light read to every chapter trying to understand. वो ऐसे नहीं होगा because audit also you need to study from someone and then you need to make notes of it. So for audit I followed Grooming Education. It's a channel on YouTube. So उन्हीं से I took the lectures, summarized lectures of audit के एक unit, एक chapter, and then I used to go through each and every unit by myself, making notes, underlining stuff as and when required. Notes banana is very very important because when I was making notes I thought that it's very useless because later on I'm not going to use it, but obviously exam se ek din pehle when it comes to revising, those notes are really really helpful. So whenever you're studying audit, try to get a conceptual clarity of what is happening, how is it happening. Do not try to cram up everything because then it will become confusing because उसमें syllabus में बहुत सारी चीज़ें हैं. Then हुआ ऑडिट का एग्जाम. तो ऑडिट का एग्जाम एज आई सेड आई हैड गिवन 2 मॉक्स ऑलरेडी. फर्स्ट मॉक डिडंट गो वेल बिकॉज आई हैड अनदर डिफरेंट इमेज ऑफ ऑडिट एंड किस तरीके से एग्जाम देना इन माई माइंड. एंड जो पेपर था इट वॉज
काफ़ी ट्रिकी वी कैन से. और द थिंग वाज इट्स नॉट लाइक मुझे आंसर नहीं पता. आई यूज टू नो द आंसर बट द लैंग्वेज विच आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एंड द लैंग्वेज दे वॉन्टेड वॉज क्वाइट डिफरेंट. तो मॉक्स डिडंट गो दैट वेल, द मॉक 1. फिर मॉक 2 में डिसाइडेड कि FMSM छोड़ो, थोड़ा कम करो, ऑडिट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो बिकॉज ये ज़रूरी है. एंड देन ऑडिट का एग्जाम हुआ. टू बी ऑनेस्ट बहुत लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा. मेरा इट वॉज वेरी ओकेश बिकॉज द पेपर वॉज नॉट बैलेंस्ड. उन्होंने कुछ कुछ यूनिट्स उठा लिए थे और उसी में से सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स ही थे. Again, not scaring you all, but audit needs, kind of learning and all stuff. So it's not like law basically. Then coming to FMSM, again FM मैंने पढ़ रखा था semester 5 में. FM is a very very interesting subject. तो उसके लिए मुझे lectures to be honest नहीं लेने पड़े. मैं मॉड्यूल में पढ़ती थी, हो जाता था. But if you want to take lectures, then I took from I think Mohnish. His name is CA Mohnish Vora, I guess. And I'll confirm and I'll add their YouTube channel link in the description box. उससे मैंने पढ़ा था एकाग्रता CA. यू कैन रेफर टू द यूट्यूब चैनल. तो उस पर यू विल गेट FM का. अच्छा, SM अगेन इज वेरी खुद से मैनेज करने वाला सब्जेक्ट. इट्स नॉट दैट हार्ड. तो अगेन यू नीड नॉट रिक्वायर एनी कोचिंग फॉर दैट. और ट्रस्ट मी 100% यू कैन ईजिली स्कोर एन एग्जाम्शन इन बोथ ऑडिट एंड FMSM without going to any coaching, and I am 100% sure about it. If you want any tips regarding कि कौन सा चैनल रेफर करना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो you can always come to me and you can always write in the comment section. I'll always be up. तुम लोगों को भी पता है, reply very quickly when a comment comes. तो मेरे हिसाब से it's really very manageable हो जाएगा. एंड रही बात हमारे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट की, which is आपका ग्रुप 2. तो कॉस्टिंग अगेन there is Pranav Popat sir. He used to teach on Unacademy earlier. So you can go to his lectures and you can do costing with that, because costing again the paper won't be hard. It would be just that ये paper lengthy बहुत होगा. तो time management is really very important. Now coming to my marks, what I got in group 2, again as I said मेरा audit was okay. तो अगले दिन के एक दिन बाद FMSM का paper was there and I had this in my mind कि मुझे audit में यार 50-55 तक तो आ जाएगा. बट तुम्हें भी पता है मैं 50-55 कह रही हूँ तो इंस्टीट्यूट कुछ भी दे सकता है मुझे. तो मुझे ये लगा था कि उसमें उतना आ जाएगा. तो मैं अपना FMSM तो कम से कम 100 का सोच के गई थी कि करना है. एंड जब मैंने FMSM का पेपर भी दे दिया था तो आई न्यू कि राइट मेरे अच्छे खासे आ जाएंगे, 80-85 तक तो आ जाएंगे. अगेन मैंने सिर्फ सोचा था 80-85, इंस्टीट्यूट तो नहीं देने वाला. बट रिजल्ट केम एंड मेरा 64 था FMSM में. आई गॉट एन एग्जाम्शन देयर एंड ऑडिट इट वॉज 40. तो मेरे यूनिट्स तो क्लियर हो गए एंड आई एम सक्सेसफुल. तो इस तरीके से मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया. एंड मेरी यही एडवाइस रहेगी कि फोकस थोड़ा ऑन मेक अ प्लान आउट बिकॉज टाइम इज रियली वेरी लेस एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो पढ़ने में सारा टाइम मत निकालो. व्हाट यू नीड इज रिविजन बहुत अच्छा होना चाहिए. नो नीड टू लुक एट इधर के क्वेश्चंस उधर के क्वेश्चंस. जस्ट स्टिक टू मॉड्यूल्स. आई बेट क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे. एडजस्टमेंट्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट अगेन स्टेप मार्किंग होती है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. मॉड्यूल से स्टिक करो. PYQs RTPs इनको देख लो बट मॉक पेपर को जरूर देखना. बिकॉज जैसे मेरा ऑडिट और FMSM में मेरे पास कोई PYQ रेफर करने के लिए था ही नहीं बिकॉज हम तो न्यू स्कीम में है ना. तो आई डिड ओनली मॉक पेपर्स. 2 बार मैंने दोनों मॉक पेपर्स लगा लिए थे. और उसके अलावा मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए. एक एक चीज रटोफाइड रहेगी. देन ओनली यू कैन परफॉर्म. और इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है. कोई सोर्सेज कहीं इधर उधर मांगना लोगों से कि मुझे नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो. देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दैट. वट एवर यू हैव इज सफिशियंट. उतना पढ़ लोगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में. That was how I cleared my CA Inter Group 2. Wishing you all luck for your September examinations. May you all clear it with good marks and all the best. Also, if you like my content, then do like, share, comment and subscribe to my channel. And do mention what video you want me to make next. Bye-bye.